welcome back to my channel. So if you don't know me, hi, I'm Ekta and I make videos of makeup tutorial. I give review of skincare products and makeup products too. So आज मैं हाजिर हूँ फिर से आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ और ये वीडियो होने वाला है क्लीन मेकअप लुक। सो बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स बहुत सारे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर जो हैं वो इस मेकअप लुक को कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट द क्लीन मेकअप लुक और मैं यही मेकअप लुक आज करने वाली हूँ उन सबसे इंस्पिरेशन लेकर। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को और ब्यूटी ब्लॉगर्स को देखा ये मेकअप करते हुए, and this makeup actually looks very clean and very fine and very glowing kind of makeup, and that's actually looks like very satisfying kind of makeup jo actually I'm a big fan of that, this kind of makeup. So I just thought, why don't I just try it, and I am over here today to just for that makeup। और मैं अपने स्टाइल में अपने तरीके से इस मेकअप को अचीव करूंगी आज, और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आपको बताऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हो आज मैंने कोई मेकअप वेयर नहीं किया है, मेरा पूरा फेस क्लीन है। मैंने फेस वॉश कर लिया है, क्लिनजिंग कर लिया, टोनिंग कर लिया, देन फेस वॉश कर लिया, एंड माय होल फेस इज क्लीन। जस्ट मैं ऐसे ही बिना कुछ लगाए इसीलिए बैठी हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप आप सबको वो मेकअप बता सकूँ। सो टुडे वी गोना डू दिस मेकअप एंड आई होप यू विल लाइक इट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज मेरा पूरा फेस आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन कर लिया है मैंने। फेस क्लींजिंग, टोनिंग एंड देन फेस वॉश, एंड माय होल फेस इज क्लीन। नाउ आई एम गोना डू स्टेप बाय स्टेप मैं चीजें करूंगी। तो अब मैं पहले करूंगी मॉइस्चराइजिंग। आई एम गोना स्टार्ट विद द मॉइस्चराइजर, एंड ओवर योर आई एम टेकिंग निविया का सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर, जो कि मेरे स्किन टोन के लिए बिल्कुल सही है बिकॉज आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन टोन। so दिस इज परफेक्ट फॉर माई स्किन टोन। ओके, सो लेट मी टेल यू, हर किसी का अलग टेक्निक होता है हर चीज को अप्लाई करने का एंड लगाने का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मॉइस्चराइजर को जब भी आप लेते हो तो जस्ट डू इट लाइक दिस रब काइंड ऑफ, बट आई पर्सनली डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ टेक्निक बिकॉज मैं जब भी वैसे कुछ करती हूँ तो माई फेस बिकम वेरी ड्राई, आई फील वेरी ड्राई ऑन माई चीक एरिया। एंड नाउ आई एम गोना apply a serum or any hydrating serum. So I'm gonna apply Mama Earth skin correcting serum, which is because I personally love that serum. So here is the Mama Earth skin correcting serum. I personally love this serum because it gives you really nice glow on your face. So you can try any of the serum which you have. So now I'm gonna use this beauty primer. I personally love this primer because it have a kind of highlighting properties which I really love it. Again, how I'm gonna apply my primer is just I'm gonna rub it on my hands like that. It's a right technique of applying primer, and then I'm gonna tap on my pores like this. I have a pores, and then my forehead, and now I'm gonna massage all over my face. Don't rub your any product on your face, just massage it. This is the right technique. Don't rub like this, just massage it gently like this. And now I'm gonna color correct my face. इफ़ यू हैव, अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स या डार्क सर्कल्स है या फिर टैनिंग है, तभी आप कलर करेक्ट करो। इफ़ यू डोंट हैव, यू डोंट हैव टू बी। सो आई एम गोना कलर करेक्ट। सो मैं ऑरेंज करेक्टर नहीं यूज करूंगी बिकॉज दिस इज अ क्लीन, इट्स गोइंग टू बी क्लीन मेकअप लुक। सो आई एम गोना यूज अ कंसीलर, एंड दिस कंसीलर इज ऑल्सो फ्रॉम स्विस ब्यूटी। सो लेट्स डू इट। दिस इज द कंसीलर फ्रॉम स्विस ब्यूटी। अगर आपने मेरे रीसेंट वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर देख लो, वहाँ पे मैंने इसका रिव्यू दिया है। मैंने एक मिनी हॉल किया था जिसमें मैंने इसको ऑर्डर किया था, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। उन वीडियोस के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डायरेक्ट जाकर वीडियोस को देख सकते हो। तो इस वीडियो के बाद जरूर जाकर देखना। So this is a Swiss Beauty concealer in shade Warm Sand, and this is one of my favorite concealer recent because this concealer is affordable and gives you full coverage, and that is really great. सो मैं कंसीलर वहीं अप्लाई करूंगी जहाँ मेरे डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, और यू नो टैनिंग है। सो आई हैव अ डार्क सर्कल्स, सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई ओवर हियर लिटिल मोर। ओके, सो कंसीलर ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक कंसीलर ब्रश ले रही हूँ, और इट्स अ काइंड ऑफ फ्लफी ब्रश, और मैं इसी से अपने कंसीलर को ब्लेंड करूंगी।
अब मैं इस कंसीलर को अपने माउथ एरिया के पास अप्लाई करूंगी बिकॉज आई हैव अ पिगमेंटेशन ओवर हियर and then on my forehead because I have a tanning issue on my forehead, sorry. So you can see, and now I'm gonna blend with this same brush. And now I'm gonna use my foundation. For foundation, I'm using Maybelline Fit Me foundation in shade Toffee. Okay, so मैं यहाँ use कर रही हूँ Maybelline Fit Me का ये compact powder in shade Toffee, and I personally love this shade because it's actually matchable to my skin tone. So I have just set my whole base with this. Now it's come to the blush, and I'm gonna use Swiss Beauty ka Ultra Blush Palette. Let me show you. So I'm gonna use this Swiss Beauty ka Ultra Blush Palette, which I really love. In this palette, you get many shades of blush. Even you get a highlighter and a contour also, which I really love about this palette. सो मैं इसमें से जो शेड है, यहाँ पे कोई भी नाम मेंशन नहीं है शेड्स का, तो मैं इसमें से जो काइंड ऑफ में से ये शेड यूज करने वाली हूँ. इट्स अ काइंड ऑफ रस्टी रोज काइंड ऑफ शेड. सो आई एम गोना यूज दिस एंड आई एम टेकिंग अ blusher brush and I'm just gonna take it a little bit and I'm just gonna see. It looks very amazing. So I'm just gonna take the shade. और जितने भी प्रोडक्ट मैं इस वीडियो में यूज़ कर रही हूँ, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप डायरेक्ट क्लिक करके उस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो. एंड नाउ आई एम गोना गो ऑन माय आईब्रो एंड आई शेडो. और मैं कोई भी डार्क शेड या बहुत तरकीला भड़कीला कुछ यूज़ नहीं करूँगी, बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ लूँगी. तो मैं अपने अंडर आइज को फिर से सेट कर रही हूँ. फॉर दैट आई एम यूजिंग इनसाइड कॉस्मेटिक का लूज पाउडर. बिकॉज ये जो क्रीसिंग लाइन्स है, आई डोंट वांट दैट क्रीसिंग लाइन्स on my upper eyes. See? Okay, so for my eyebrow, I'm gonna first brush my eyebrow, then I'm gonna fill them. अपने आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ Maybelline का कॉलोसल काजल. I'm not gonna use any brow pencil or something. I'm just gonna fill with this only. और एक एंगल ब्रश की हेल्प से फिर मैं इसको शेप अप कर दूंगी. एंड नाउ आई एम गोना टेक अ एंगल ब्रश जिसमें ऑलरेडी ये काजल लगा हुआ है. मैं उसकी हेल्प से अब अपने आईब्रोज को शेप दे दूंगी. My eyebrows are now filled, and now I'm gonna use a eyeshadow in a very neutral tone kind of eyeshadow I'm gonna use. For that, again, I'm using the Swiss Beauty Ultra Blush Palette, and I'm gonna take this shade, this brown contouring shade. I'm gonna take and now I'm gonna apply the same colossal kajal.
And again, I'm gonna use the Swiss Beauty Ultra Blush Palette, and I'm gonna take this highlighter. It's a kind of a golden highlighter, not shimmery. It's a golden kind of, so that's why I'm applying this highlighter. See? And now I'm gonna curl my eyelashes, and for that, first I'm gonna curl them. And now I'm gonna apply my favorite mascara. It's from Maybelline Colossal Mascara. Okay, so I'm not going to use any contour or something because in clean makeup look you don't need to do a contouring. And now lipstick की बारी है तो मैं अपना favorite lip color लगाऊंगी. I'm gonna use this Tintin Cosmetic का ये lip color in Coffee Bean. I personally love this Tintin Cosmetics lipstick. Personally, I really love this lipstick and this is my favorite one. It's a kind of crayons lipstick because it's very smooth. The texture is very smooth and doesn't feel heavy. It's a very lightweight lipstick. So I love this one from Tintin Cosmetic. So we don't need this much of lipstick. So I'm gonna swipe up a little bit. So I have removed excess lipstick and now I have taken Maybelline's New York Baby Lip and I'm gonna take a little bit of baby lip. I'm not taking gloss because I'm not a big fan of glosses on all. That's why I'm taking this lip balm, but you can take even you, but if you like gloss, then you can use any lip gloss. So finally my whole look is ready as you can see. I hope you like the video. So this is my clean makeup look. I have not used much product in this video because it was about clean makeup look. So I have not used much product. और जितने product मैंने use किए उन सब के description में link है. So you can go and check over there. So for more such amazing videos, go and subscribe my channel. Don't forget to hit that bell and please subscribe my channel. Do like, share, comment और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पे भी शॉर्ट अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस पोस्ट हैं. So I hope you enjoyed the video. Till then, see you in the next video. Bye bye.